द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रोनिक साइनोसाइटिस। क्रोनिक साइनोसाइटिस इन जनरल साइनस इन्फेक्शन जो होता है वो लास्ट करता है मंथ और द ईयर, इज कॉल्ड एज क्रोनिक साइनोसाइटिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द क्रोनिक साइनोसाइटिस इज द फेलियर of acute infection to resolve. The acute infection destroys the normal ciliated epithelium, impairing the drainage from the sinus. Pooling and stagnation of the secretion in the sinus invites infection. जो बेसिकली सारे सिक्रेशंस ना जमा होने लगते हैं वहीं साइनसेस के अंदर, जिसकी वजह से वो एक इन्विटेशन होता है इन्फेक्शन का। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन कॉजेज म्यूकोसल चेंजेस। इन्फेक्शन प्रेजेंट होने की वजह से म्यूकोसल चेंजेस होते हैं, सच एज लॉस ऑफ सीलिया, सीलिया चली जाती है, एडिमा हो जाता है, वहाँ पे पॉलिप हो जाता है, पॉलीफॉर्मेशन हो जाता है, दस कंटिन्यूइंग द विस्कस साइकिल, जिसकी वजह से एक विस्कस साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, दिस इज अ साइकिल एज यू कैन सी इन दिस फिगर। ठीक है, inadequate therapy for the acute sinusitis, infection हो जाता है। as soon as the infection start that impairs the drainage impairment, polyp, DNS, adenoid tumors, इन सब की वजह से loss of cilia हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, impaired drainage की वजह से भी हो सकता है, म्यूकोसल चेंजेस की वजह से हो सकता है लॉस ऑफ cilia। म्यूकोसल चेंजेस एलर्जी की वजह से होंगे। ठीक है, लॉस ऑफ cilia तो हमारा पॉल्यूशन, केमिकल इन्फेक्शन वजह से टोटल ओवरऑल ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्रोनिक साइनोसाइटिस की एक विस्कस साइकिल शुरू हो जाती है। क्रोनिक साइनोसाइटिस इज अ क्रोनिक इन्फेक्शन प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड द अटेम्प्ट एट द हीलिंग proceed simultaneously. Sinus mucosa becomes thick and polypoidal, that is hypertrophic sinusitis, or undergoes atrophy, that is atrophic sinusitis. ठीक है, surface of epithelium may show desquamation and regeneration or metaplasia. Some mucosa is infiltrated with the lymphocyte, जो सब म्यूकोसा होती है उसमें lymphocytes infiltrate कर जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, may show microabscess, जिसकी वजह से वहाँ पे सब म्यूकोसा में माइक्रोएब्सेस मिलेंगे, आपको ग्रेनुलेशन मिलेगा, फाइब्रोसिस और पॉलीफॉर्मेशन होगा वहाँ पे। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी देखें तो मिक्स्ड एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म आर ऑफन प्रेजेंट। द क्लिनिकल फीचर्स आर ऑफन वेग एंड similar to those of the acute sinusitis but lesser severity. Purulent nasal discharge is commonest complaint. Foul smelling discharge that suggests anaerobic infection. Local pain and headache is often marked except in the acute exacerbation. Some patients complain of the nasal stuffiness and anosmia. X-ray of the involved sinus may show mucosal thickening or opacity. X-ray after injection of the contrast material may show soft changes in the mucosa, sinus mucosa. CT scan कराएंगे, particularly useful in the ethmoid and the sphenoid sinus infection, has replaced the studies with the contrast material. Aspiration and irrigation, finding of the pus in the sinus is confirmatory. Treatment अगर देखें तो it is essential to search for underlying etiological factor which obstruct the sinus drainage and ventilation. A workup for the nasal allergy may be required. Culture and sensitivity of the sinus discharge help in the proper selection of the antibiotics. Initial treatment of the chronic sinusitis is conservative, including the antibiotic, decongestant, antihistaminic, and sinus irrigation. More often, some form of the surgery is required, either to provide free drainage, ventilation, or radical surgery to improve all the irreversible disease so as to provide the wide drainage to the obliterate the sinus. Recently, endoscopic sinus surgery is replacing the radical operation on the sinuses and provide good drainage and ventilation. So, endoscopic sinus surgery is good to be done. It also avoids the external incision. सर्जरी फॉर क्रोनिक साइनोसाइटिस, क्रोनिक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस की सर्जरीज देखें तो पहला है हमारा एंट्रल पंचर एंड इरिगेशन. साइनस कैविटी इज इरिगेटेड विद द कैनुला पास थ्रू द इंफीरियर मीएटस. रिमूवल ऑफ द पस एंड एक्सुडेट हेल्प्स इन द साइनस म्यूकोसा टू रिवर्ट टू द नॉर्मल. इंट्रानेजल एंड एंट्रोस्टोमी कर सकते हैं, इंट्रानेजल एंट्रोस्टोमी इंडिकेटेड if the sinus irrigation fails to resolve infection. A window is created in the inferior meatus to provide aeration to the sinus and its free drainage.
Caldwell-Luck operation होता है. In this operation, antrum is entered through the anterior wall by the sublabial incision. All the irreversible disease are removed and the window is created between the antrum and the inferior meatus. Detail बाद में देखेंगे. The chronic frontal sinusitis, that is intranasal drainage operation, correction of the deviated septum, removal of the polyp and the anterior portion of the middle turbinate. ठीक है, intranasal drainage operations में करेक्शन, deviated septum है तो उसको करेक्ट करेंगे, पॉलिप है तो वो रिमूव करेंगे, anterior portion of the middle turbinate and the intranasal ethmoidectomy provide the drainage through the frontonasal duct. The treatment of associated maxillary sinusitis also helps to resolve the chronic frontal sinusitis. The termination of the frontal sinus, as we have seen earlier in the last video, the external frontoethmoidectomy, that is Haworth's or the Lynch operation. The frontal sinus is entered through the floor by the curvilinear incision. जो frontal sinus है उसको हम enter करते हैं through the hole by the curvilinear incision round the inner margin of the orbit. Diseased mucosa is removed, ethmoid cell exentrated and a new frontal duct is created. The osteoplastic flap operation may be unilateral or bilateral. A coronal or a brow incision is used. The anterior wall of the frontal sinus is reflected as osteoplastic flap based inferiorly. The diseased tissue are removed and the sinus drains through a new frontonasal duct. If it is desired to be obliterate the sinus, all the disease as well as healthy mucosa are stripped off and the sinus obliterated with the fat. Chronic ethmoid sinusitis, that is intranasal ethmoidectomy. The operation is done for the chronic ethmoiditis with the polyp formation. The ethmoid air cells and the diseased tissue are removed between the middle turbinate and the medial wall of the orbit by the intranasal route. The frontal and the ethmoid sinus can also be drained by this operation. External ethmoidectomy होती है तुम्हारी. In this operation, ethmoid sinus are approached. ethmoid sinus को हम approach करते हैं through the medial orbital incision. SS can be obtained to the sphenoid and the frontal sinuses. The operation is called frontosphenoethmoidectomy. ठीक है. And then chronic sphenoiditis, that is sphenoidotomy, that is access to the sphenoid sinus can be obtained by removal of the anterior wall accomplished by the external ethmoidectomy and transseptal approach, usually in the former because of the coexisting ethmoid disease with the chronic sphenoiditis. Fungal infection of the sinuses, अगर हम बात करें तो तुम्हारा many different species of the fungi are found to involve the paranasal sinuses. The more common being aspergillus हो गया, अल्टरनेरिया होगा, म्यूकर हो गया, rhizopus हो गया. They may involve single or multiple sinus. 4 different variety of the fungal infection of the sinus are fungal ball होती है. It is due to the implantation of the fungus into the otherwise healthy sinus, which on the CT shows hyperdense area with no evidence of the bone erosion or the expansion. Maxillary sinus is most commonly involved, followed by the sphenoid, ethmoid, frontal in that order. The treatment is surgical removal of the fungal wall and adequate drainage of the sinus. No antifungal therapy is required in case of the fungal wall. Allergic fungal sinusitis की बात करें, it is allergic reaction to the causative fungus and the present with the sinusal polyposis and the mucin. The latter contains eosinophil. ठीक है. जो एलर्जिक रिएक्शन होती है टू द causative fungus present with the sinus polyposis and mucin. इसमें eosinophil होता है, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स होते हैं और फंगल हाइफे होते हैं. ठीक है, eosinophil, चारकोट लेडन क्रिस्टल एंड फंगल हाइफे, ये 3 चीजें मिलेंगी. देयर इज नो इन्वेजन ऑफ द साइनस म्यूकोसा विद द फंगस. साइनस म्यूकोसा इन्वेड नहीं होती विद द फंगस. यूजुअली मोर देन 1 sinuses are involved on one or the both sides. CT scan shows mucosal thickening. CT
CT स्कैन में तुम्हें म्यूकोसल थिकनिंग मिलेगी, हाइपरडेंस एरियाज होंगे, देयर मे बी एक्सपेंशन ऑफ द साइनस और द बोन इरोजन ड्यू टू द प्रेशर but no fungal invasion. The treatment is endoscopic surgical clearance of the sinus with provision of the drainage and the ventilation. This is combined with the pre and post operative systemic steroid. Chronic invasive sinusitis होता है where the fungus invades into the sinus mucosa. There is bone erosion by the fungus. The patient present with the chronic rhinosinusitis. The CT scan shows thickened mucosa with opacification of the sinus and the bone erosion. Patient may have intracranial or intraorbital invasion. Histopathological shows fungal infection of the submucosa and the granulomatous reaction with the multinucleated giant cell. Treatment consists of surgical removal of the involved mucosa, bone and the soft tissue followed by the antifungal therapy with amphotericin B. Total of 2 to 3 gram of the drug is given followed by the itraconazole therapy for 12 months and more monitored by the serial CT and MRI scale. Fulminant fungal sinusitis की बात करें तो it is acute presentation and mostly seen in the immunocompromised or the diabetic individual. Common fungal species are mucor and aspergillus जो इसमें होते हैं fulminant fungal sinusitis में, ठीक है. As you can see this figure, the aspergillus fungus, note the septate hyphae and the acute angle branching arrows, ठीक है. septate hyphae acute angle branching होती है इसमें, ठीक है. पहला वाला HNE स्टेनिंग है, दूसरा वाला तुम्हारा गोमोरी मेथामीन सिल्वर स्टेन है, ठीक है. And this is functional endoscopic surgery of the paranasal sinus with the out monitor and the camera. This is endoscopic surgery in the progress endoscope and the other surgical instrument pass through the nose and the surgery is performed by looking at the monitor, ठीक है. ये है. Now coming back to the fulminant fungal sinusitis, the म्यूकर अगर कॉज होता है, म्यूकर अगर कॉज है, रेहिनो सेरिब्रल डिजीज वो कराता है. म्यूकर जो होता है, म्यूकर रेहिनो सेरिब्रल डिजीज कराता है ड्यू टू इन्वेजन ऑफ द ब्लड वेसल में इन्वेट करता है. म्यूकर फंगस कॉजेज इस्चेमिक नेक्रोसिस प्रेजेंटिंग एस, जो म्यूकर होता है, म्यूकर राइनो सेरिब्रल डिजीज कराएगा, ठीक है. ब्लड वेसल का इन्वेजन करेगा. म्यूकर फंगस जो होता है वो कॉज करता है इश्मिक नेक्रोसिस. इश्मिक नेक्रोसिस होगी तो ब्लैक स्कार इन्वॉल्विंग इंफीरियर टर्बिनेट पैलेट और द साइनस. जो इंफीरियर टर्बिनेट है, पैलेट है, साइनस है, वहाँ पे ब्लैक स्कारिंग होगी, ठीक है, क्योंकि इश्मिक नेक्रोसिस कराती है. स्प्रेड टू द फेस, आई, स्कल, बेस एंड द ब्रेन. ट्रीटमेंट में सर्जिकल डिब्राइवमेंट करेंगे नेक्रोटिक टिश्यू का और इंट्रावेनस एम्फोटेरिसिन बी दे देंगे, ठीक है. एस्परजिलस इन्फेक्शन कैन कॉज also cause acute fulminant sinusitis with severe tissue invasion. Such patient present with the acute sinusitis develop sepsis, other sinus complication. Unlike the mucor infection, there is no black scar. The treatment is antifungal therapy and surgery in case of aspergillus, ठीक है. Functional endoscopic sinus surgery. Better understanding of the pathophysiology of the recurrent and the chronic sinusitis and the fact that the most of the changes are reversible if proper drainage and ventilation is provided to the sinuses in more recent years led to the development of the endoscopic surgery of the sinuses, and this has further been made possible by the advance of technology such as development of the rigid endoscope which provide better illumination and magnification and permits visualization of the structures situated at the different angles, ठीक है. Microsurgical instrument which permits the precise and limited surgery directed at the specific sites, remove the obstruction to the sinus ostia. Endoscopes can be passed through the cannula into the maxillary sinus to visualize the interior and take accurate biopsy or deal with the certain pathological conditions such as the small cyst and the polyps. With endoscopic surgeries, it is now possible to cure the selected cases of the chronic and recurrent infection of the frontal, maxillary, ethmoid and sphenoid sinuses without resort to the external operations, ठीक है. This completes our topic of the chronic sinusitis. We will continue with the next topic, that is complication of the sinusitis. I have completed acute sinusitis. Go and watch that video also. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you guys.